Good morning, student. Myself Chirag Sukani from Rafael BBA College Vapi, and I'm going to teach you fundamental of economics subject. Now, today in this session, we will start the next chapter, that is national income. So, first of all, what do you mean by national income? So, national income is what? Money value of all the final goods and services produced in the country during a specific period of time. It means जो फॉर एग्जांपल इंडिया, सो इंडिया के बाउंड्रीज में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है उसका मनी वैल्यू, उसका क्या मनी वैल्यू, दैट इज कॉल्ड इज व्हाट नाशनल इनकम. सो नाशनल इनकम इज व्हाट मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन द कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. नाउ we all know that in an economy there are different type of goods and services are produced and it is not possible to physically add them. Take an example, if the food grain which is measured in terms of kilogram, milk is measured in terms of liter, cloth is measured in terms of meter. Likewise there are different type of services also, like lawyer service, teacher service, doctor service, artist services and so. Okay, so हमारी कंट्री में और इकोनॉमी में डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है, तो हर एक गुड्स एंड सर्विसेज को फिजिकली ऐड करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हर एक गुड्स का मेजरमेंट अलग अलग हो रहता है. फॉर एग्जांपल फूड ग्रेन को किलोग्राम में मेजर किया जाता है, मिल्क को लीटर में मेजर किया जाता है, क्लोथ को मीटर में मेजर किया जाता है. लाइकवाइज इकोनॉमी में डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज भी है, लॉयर की सर्विस, टीचर की सर्विस, डॉक्टर की सर्विस, आर्टिस्ट की सर्विस एंड सो. दैट इज़ वाई नेशनल इनकम cannot be stated as what so many million tons of food grain, so many million liters of milk, so many million meters of cloth. ये आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं. Therefore, all these goods and services are measured in terms of what? Money. Okay, that is why the value of different goods and services produced during a given year, which is represented in terms of money and added together, we can find out value of the national income or the national output. आया समझ में? So हर एक का goods and services का value, that is value of different goods and services which is produced during a given year, which is represented in terms of money. हर एक का वैल्यू मनी में प्रेजेंट करना है, एंड एडेड टुगेदर वी कैन फाइंड आउट नेशनल इनकम और द नेशनल आउटपुट. क्लियर? नाउ definition of national income. Now this definition given by different authors. So first definition given by Professor Marshall. Now according to Professor Marshall, what is national income? The sum total of flow of net output which is turned out by the productive factors in a year, it is what national income. Now the sum total of flow of net output. So here Professor Marshall ने किसके ऊपर वेटेज दिया? That is what net output which is turned out by the productive factors in a year, it is what national income. Now we all know that कि productive factors कौन है? That is land, labor, capital, entrepreneur. Okay, so land, labor, capital, entrepreneur which cooperate with each other in order to produce a given output. Okay, this is called as what national output, either in a farm or either in a factory. So Professor Marshall deals national income from the side of real production. ओके, यानी आउटपुट प्रोडक्शन के ऊपर प्रोफेसर मार्शल ने वेटेज दिया है. सो अकॉर्डिंग टू मार्शल, व्हाट इज नेशनल इनकम? सम टोटल ऑफ फ्लो ऑफ नेट आउटपुट विच इज टर्न आउट बाय द प्रोडक्टिव फैक्टर्स. एंड प्रोडक्टिव फैक्टर्स कौन सा है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर विच कोऑपरेट इन द farm or either in the factory in order to produce the output. So this output, it is termed as what? National income. So Professor Marshall deals with national income from the side of real production. Clear all of you? Chalo, next is what? According to Professor Pigou. Now second definition given by Pigou. So according to Professor Pigou, national income is the total objective income of the country which can be measured by the rod of money, and it includes income from the foreign countries also. Okay, so here Professor Pigou, he gives more focuses on the objective income, that is what income side. Okay, so national income is what? Total objective income of the country,
and this income which is measured in terms of what? Money, and it also include income from the foreign country. So Professor Pigu deals national income from the side of मनी इनकम. जस्ट लाइक प्रोफेसर मार्शल ने आउटपुट प्रोडक्शन के ऊपर फोकस किया, लाइकवाइज प्रोफेसर पिगू सेज दैट कि नेशनल इनकम कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ व्हाट? In terms of what? Money income. Clear? And last definition, that is Professor Fisher. So according to Professor Fisher, national income is what? Material goods and services for the final consumption. Now consumption, it means यूजेज के ऊपर प्रोफेसर फिशर ने फोकस किया कि नेशनल इनकम क्या है? मटीरियल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द फाइनल कंजप्शन. सो प्रोफेसर फिशर डील्स national income from the side of the consumption. So here three definitions are given, that is Professor Marshall, he says that national income can be measured in terms of what? National output, that is national product, yani production point of view. Likewise Professor Pigu, he give more focuses on the income side, okay, and third Professor Fisher, he give more focuses on the consumption side, that is what? Expenditure side. Clear all of you? So these are the three definition of the national income according to the different authors, that is Marshall, Pigu and the Fisher. Now the next is basic concept of national income. Okay, so in our syllabus there are 7 concept is given, that is gross domestic product, then net domestic product, then gross national product, net national product, then personal income, disposable income and the per capita income. Okay, चलो first point ले लो, gross domestic product. Now domestic यानी within the territory of India, that is what domestic. So what is gross domestic product? Okay, gross domestic product is what? Money value of all the final goods and services produced within geographical boundaries of country during a given year, whether they are produced by the national of the country or the foreigner, yani whether they are produced by the normal resident as well as non-resident but within domestic territory of the country. Clear? So gross domestic product that is GDP क्या होता है कि जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया के बाउंड्री में प्रोड्यूस हुआ उसका मनी वैल्यू, that is money value of all the final goods and services produced within the geographical boundaries of country, and this production it is done by whether resident of the country या नॉन रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. रेसिडेंट यानी आइधर वो इंडिया वाले प्रोड्यूस करे या आइधर वो फॉरेनर इंडिया में आके प्रोड्यूस करे. हर एक का मनी वैल्यू दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. सो मीनिंग याद रखना है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज व्हाट? मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस within geographical boundaries of country in a given year, and whether these goods are produced by national of the country or the foreigner, that is normal resident of the country as well as non-resident of the country, but within geographical territory of the country. Now in GDP only final products are calculated, that is final product and finished product are calculated, that is intermediate goods which are used in the production process, it is not included. So याद रखना कि in calculation of gross domestic product only value of the final goods are taken into consideration, the value of the intermediate goods, raw material goods are not taken into consideration for the calculation of the gross domestic product. Clear? So formula for calculating gross domestic product is what? Money value of final goods and services produced within the country's boundary minus income earned from the abroad, income earned from the foreign, because वो इनकम भले इंडिया के पर्सन अर्न करे बट वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के आउटसाइडर से आया है, ओके, फॉरेन से आया है. सो फॉरेन का इनकम को हम लोग को क्या करना है? डिडक्ट करना है, माइनस कर देना है. सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज व्हाट? मनी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री बाउंड्री
minus income earned from the foreign. Now this GDP, it is calculated with the help of two method, that is GDP at current price and GDP at a constant price. Now the name itself suggests GDP at a current price. It means that when prevailing price or current price in a year are used for measuring the GDP, na, it is called as what? GDP at a current price. Take an example. If government want to measure the value of the final goods and services produced within the domestic territory of India during the year 2019-20 at a price prevailing in the year 2019-2020 itself, so we can call it GDP at a current price. आया समझ में? इन शॉर्ट, जो ईयर का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मेजर करना है, ओके, और वो मेजरमेंट वही ईयर की प्राइस को लेके मेजर करेंगे ना, कैलकुलेट करेंगे ना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? जीडीपी एट अ करंट प्राइस. सो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि गवर्नमेंट को ईयर 2019-20 में जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुआ उसका वैल्यू निकालना है एट अ प्राइस प्रिवेलिंग इन द ईयर इटसेल्फ, यानी प्राइस 1920 का लेके ही आपको कैलकुलेट करेंगे. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? जीडीपी एट अ करंट प्राइस. Okay, and GDP at constant price means what? कि when we use price of some base year price आप लेके GDP कैलकुलेट करते हो ना, that is called as what? GDP at a constant price. Take an example. If the government want to measure the gross domestic product of the year 2019-20, but उसने प्राइस किसका लिया? The base year price. Take an example of year 2015 and 16 for calculation of the GDP of the 1920. That is called as what? GDP at a constant price. ओके, अभी आपका क्वेश्चन जाएगा कि ऐसा क्यों करते हैं. सो ये गवर्नमेंट समटाइम व्हाट हैपन कि 1920 में प्राइस डिसाइड नहीं कर पाते हैं. सो गवर्नमेंट एज्यूम करते हैं कि जो सिचुएशन है 1920 का, तो हम लोग बेस ईयर ले लेते हैं आगे कोई ईयर्स का, and then calculate करते GDP. that is called as what? GDP at a constant price. Okay, so when we use some base year price for the measurement of value of GDP, it is called as what? GDP at a constant price. Clear? Now next, GDP can be calculated again. GDP can be considered as what? Factor cost as well as GDP at a market price. So यहाँ पे two concept, GDP at a factor cost and GDP at a market price. So now you just formula use करना है कि GDP at a factor cost, it is arrived by adding domestic factor income and consumption of the fixed capital. ओके, सो ये गवर्नमेंट का स्टैटिक फॉर्मूला है कि जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, इट इज कॉल्ड, इट इज व्हाट? डोमेस्टिक फैक्टर इनकम प्लस कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. एंड सेकंड, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, यानी कि व्हेन द जीडीपी इज इवेल्युएटेड, कैलकुलेटेड एट अ प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट इटसेल्फ, it is called as what? GDP at a market price. Okay, and a current price use करके जो GDP calculate करते, that is called as what? GDP at a market price. Now after GDP, the next concept is what? Net domestic product. Now gross में से हम लोग डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे ना, वैल्यू ऑफ डेप्रीशिएशन, वी कैन गेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. Okay, so net domestic product is nothing but when value of depreciation is deducted from the value of the gross domestic product, na, we can get net domestic product. That is what? NDP. So formula of net domestic product is what? GDP minus capital depreciation. ओके, तो जो उसका फॉर्मूला है वही उसका मीनिंग हो जाएगा कि व्हेन द वैल्यू ऑफ डेप्रीशिएशन इज डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वी कैन गेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. सो एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रीशिएशन. क्लियर? देन नेक्स्ट इज व्हाट? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. नाउ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, फर्स्ट क्या हुआ? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. नेक्स्ट इज व्हाट? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. अभी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. नाउ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज व्हाट? इट इज अ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नेशनल ऑफ द कंट्री ओनली, by the national of the country in a given year. It means ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में फॉरेनर का इनकम नहीं आएगा, यानी फॉरेनर कोई इंडिया में आके प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, उसका इनकम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में नहीं आएगा. सो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज व्हाट?
total market value of all the final goods and services produced by national of the country in a given year. Now, there are certain points which should be taken into consideration while calculating gross national product. Okay, so first point, gross national product measure market value of the annual output. Now, market value of the annual output, that is called as what? Monetary measure. Now, it means gross national product only measure in terms of what? Money, because there is no any other way of adding up different goods and services produced in a given year except with their money price. यानी मनी वैल्यू के अलावा कोई भी अदर मेथड नहीं है कि एडिंग ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड करें एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करें. ओके, सो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मेजर the market value of the annual output, that is called as what? Monetary measure. So there is no any other way of adding up the different goods and services produced in a year except with their money price. Second, for calculating the gross national product, all the goods and services produced in a given year must be counted only at once. Okay, it means double counting should be avoided. Now, double counting should be avoided यानी market value of the input material or intermediate goods are excluded. Sometime what happen कि रॉ मटेरियल का भी मनी वैल्यू निकाल देंगे एंड रॉ मटेरियल से जो फिनिश प्रोडक्ट बना उसका भी मनी वैल्यू निकाल देंगे. ओके, तो हम लोग ने फाइनल गुड्स में रॉ मटेरियल का तो अल्टीमेटली फाइनल गुड्स में इंक्लूड हो ही जाता है. सो अगर हम लोग रॉ मटेरियल का भी वैल्यू काउंट करेंगे एंड फिनिश गुड्स में फिनिश प्रोडक्ट का भी वैल्यू काउंट करेंगे तो रॉ मटेरियल का तो 2 टाइम कैलकुलेट हो जाएगा, डबल काउंटिंग हो जाएगा, तो मिस्टेक हो जाएगा. दैट इज वाई फॉर कैलकुलेटिंग द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, all the goods and the services produced in a given year must be counted only at once. It means double counting should be avoided. And double counting कैसे avoid होगा? That is market value of the raw material goods or the intermediate goods are excluded. निकाल देना है. Third is what? The money value of the currently produced goods must be taken into calculation in for the gross national product. Now, currently produced goods, it means if there are certain goods which is produced in the year 2019 are not sold till the year 2020, then they would be part of the gross national product of the year 2019 and not of the year 2020. Okay, so money value of currently produced goods वो आपको कंसिडर करना है इन केस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. नाउ समटाइम व्हाट हैपन, ऐसे बहुत सारे गुड्स है जो कोई ईयर में प्रोड्यूस होता है बट वही ईयर में उसका सेलिंग नहीं होता है. ओके, उसका सेलिंग नेक्स्ट ईयर में भी हो सकता है. तो जो करंटली प्रोड्यूस गुड्स यानी जो ईयर में प्रोड्यूस हुआ है उसका ही मार्केट वैल्यू निकाल के आपको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है. Okay, so there are certain goods which is produced in the year 2019 which is not sold till the year 2020. So they would be part of the GNP of the year 2019 and not of the year 2020. Then fourth, transfer payment are also not included in the gross national product. ओके, ट्रांसफर पेमेंट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में इंक्लूड नहीं होता है. फॉर एग्जांपल ओल्ड एज पेंशन, ग्रांट एंड गिफ्ट एंड सो ऑन. नाउ ये ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है कि गवर्नमेंट पीपल को ट्रांसफर पेमेंट देते हैं. ओके, गवर्नमेंट में गिव सम स्पेशल सिक्योरिटी बेनिफिट such as old age pension, unemployment all to the people na, such payment it is called as what? Transfer payment. Clear? So transfer payment are not included in the calculation of the gross national product. So these are the points should be taken into consideration while calculation of the gross national product. Okay, so last, that is net national product. Now net national product, it is also called as what? Net national product at a market price. So when we subtract, that is deduct depreciation value from the gross national product, we can get net national product. So what is the formula of net national product? That is gross national product minus depreciation. Okay, so it is a market value of all the final goods and services
after providing for depreciation. So we can call it what? National income at a market price. Now net national product at a factor cost. नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट. नव ये सब फॉर्मूला है जो आपको याद रखना ही पड़ेगा. सो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट इज नथिंग बट नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री. Okay, now the difference between net national product at a market price and net national product at a factor cost arises from the fact that कि indirect tax and the subsidies cause the market prices. It means कि net national product at a factor cost can be arrived by deducting indirect tax and the subsidy. So net national product at a factor cost is what? Net national product at market price minus indirect tax plus subsidy. Okay, so net national product at a factor cost is nothing but national income of the country. Okay, so यहाँ पे हम लोग ने 4 कंसेप्ट ओवर किया. दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड द नेट नेशनल प्रोडक्ट. नाउ इन नेक्स्ट सेशन हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे. दैट इज पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम एंड द पर कैपिटा इनकम.